Hi everyone and welcome back to my channel, The Literary Lounge again. So today I brought for you a walkthrough video of the chapter Mother's Day, which is chapter number 5 from your class 11th book, Snapshots. So the story of Mother's Day, revolves around the sacrifices and selfless devotion that a mother gives in order to, nourish a happy and healthy home, right? The mother in this story, Mrs. Pearson, is one such woman. तो ये हम इससे रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी से, कैसे एक घर की औरत, हमारी माँ, कैसे घर को बांध के रखती है. आई मीन शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, सारी एक्टिविटीज़, खाना बनाना, कपड़े धोना, सबका लंच मॉर्निंग में उठ के तैयार करना, राइट. हाउ शी टेक्स ऑल दीज पेन्स, हाउ शी गोज टू एक्सट्रीम लिमिट्स टू keep things, do things in time for all the other, members of the family. A mother in an Indian household, especially, it is actually a universal theme, but especially if we talk about our culture, right, she struggles all day, right, to fulfill every whim and fancy of the family, of the members, right, of the husband, of the children, right, a daughter named Doris and, a son named Cyril in this story, and the husband, George Pearson. Now, this story, it talks about the life of a disappointed woman who is Mrs. Anne Pearson or Annie Pearson, and there are 4 family members, including Anne Pearson. The 3 family members, other than Mrs. Pearson, they live a very, busy social life and relegate Mrs. Pearson to the position, of domestic help. She is like a servant in the family, in her own house. वो काम नौकरों की तरह काम करती हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. और जो बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनकी अपनी बाहर सोशल लाइफ है, वर्क लाइफ है, उसमें वो इतना एंगेज रहते हैं दैट they almost don't know whether one more person exists in the family or not, right? This creates, a sense of frustration and discontentment. Satisfaction का जो opposite word होता है, that is discontentment in Mrs. Pearson, who only wants some appreciation and attention, right, and reciprocation from her beloved family. तो वो चाहती हैं कि वो जो मोहब्बत करती हैं फैमिली से, ठीक, उनके लिए हर वक्त काम करती हैं, उनका खाना बनाती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, उसके बदले में उन्हें थोड़ा सा प्यार मिले, उसको रेसिप्रोकेट करें उनकी फैमिली मेंबर्स. इट्स लाइक कभी बेटी आके कहे, माँ लाइए मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, टुडे आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, राइट. दिस इज व्हाट शी वांट्स. एंड थिंग्स टेक अ ट्विस्ट व्हेन अ मैजिशियन एंड अ फॉर्च्यून टेलर, मिसेस फिट्जराल्ड, हु लिव्स next door, right, she moves into the neighborhood, right. वो बराबर में आ जाती हैं and she is living right next door, and she strikes a friendship with Mrs. Pearson. Mrs. Fitzgerald, she strikes a friendship and they become very close, and Mrs. Pearson confides in her. वो उन पे भरोसा करके उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताने लगती हैं. And it is very human. हमारे अंदर जब बहुत गुबार होता है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, वी वॉन्ट समवन टू टॉक टू. हम चाहते हैं वो सारा हम किसी को बता दें, थोड़ा दिल हल्का हो जाए, राइट. सो शी स्टार्ट्स टेलिंग, मिसेस पियर्सन स्टार्ट्स टेलिंग ऑल हर ट्रबल्स, अबाउट ऑल हर ट्रबल्स टू मिसेस फिट्जजेराल्ड. Now, Mrs. Fitzgerald is the exact opposite of what Mrs. Pearson stands for, or what Mrs. Pearson is. She is a meek, submissive lady, Mrs. Pearson. On the other hand, Mrs. Fitzgerald is extremely cynical and she is very bold, right? And she is a very headstrong woman and she devises a plan. वो एक plan hatch करती हैं, Mrs. Pearson को बताती हैं, to correct the ways, to make amends, to rectify the mistakes, repeatedly done by the family members of Mrs. Pearson, right? And she conspires to exchange souls. When she was out in the east, right, with her husband, she learned some tricks there. उसमें एक ट्रिक ये भी है कि कैसे souls exchange करने हैं. And this is just fiction. This cannot happen in reality. But this, play sends a very strong message. तो fiction है, इसलिए इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं. There is an element of supernatural here in this story. So she conspires to exchange the soul, the spirit of Mrs. Pearson with her, soul, so that she can teach a family a lesson, right? A very tough and much needed lesson in gratitude and humility. How to respect people, how to respect family members, how to respect friends, right? These 3 members, they have a very haughty demeanor. बहुत घमंड रहता है उन्हें कि हम काम करते हैं, पूरे दिन काम करके आते हैं, माँ ये लाओ, माँ वो लाओ. So she wants to change that. Mrs. Pearson is a docile woman. दब्बू किस्म की बहुत डरपोक सी औरत है, and she does not want to disrupt the peace and quiet of a middle class home. तो हमारे यहाँ भी हमने देखा होगा, आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, उसमें भी यही होता है, नहीं मैं नहीं चाहती घर में कोई ना इत्तेफाकी हो. आई डोंट वांट कि घर में कुछ माहौल बिगड़े. सो माहौल ना बिगड़ने के चक्कर में द वुमेन, द मदर, शी कीप्स बियरिंग ऑल द ब्रंट. वो सब झेलती रहती है, बर्दाश्त करती रहती है.
and she lacks, Mrs. Pearson, she lacks the carelessness to, talk tough with the family, with the husband and the kids. And eventually she is won over by the plan, and their souls are exchanged. जब फिट्जराल्ड बताती है कि देखो ऐसे ऐसे होगा, हम बॉडीज एक्सचेंज करेंगे, सोल्स एक्सचेंज करेंगे, यू कैन गो टू माई हाउस और मैं तुम्हारी फैमिली को डील करूंगी, आई नीड ओनली अ लिटिल टाइम. सो फाइनली शी इज कन्विंस, उसे फिट्जराल्ड कन्विंस कर लेती हैं सोल्स एक्सचेंज करने के लिए. इनिशियली शी वॉज रिलेक्टेंट, शुरू में उन्हें इसे ये ठीक नहीं लग रहा था, बट फाइनली शी अग्रीज. Now, Mrs. Fitzgerald in Mrs. Pearson's body, she goes to the Pearson house, right? And the first person she encounters is the spoiled daughter, the spoiled brat, Doris, जो बेटी है Mrs. Pearson की. उसकी एंट्री सबसे पहले होती है प्ले में, right? And she has some plans for the evening today. She is planning to go out for a date, right? She wants to go out on a date with her boyfriend, whose name is Charlie Spence, right? And she is commanding her mother, not requesting. She is actually commanding, order दे रही है अपनी माँ को, right, to prepare her yellow silk dress and also a cup of tea. तो वो घर में घुसती है और माँ से अपने पहला सवाल करती है, माँ, have you ironed my yellow silk? I mean, कोई ग्रीटिंग नहीं, हाय हेलो माँ तुम कैसी हो, दिन कैसा गुजरा, नो नथिंग. शी स्ट्रेट फॉरवर्डली शी कम्स टू द पॉइंट के तुमने मेरी ड्रेस प्रेस करी कि नहीं करी. टू हर डिसमे एंड टू हर शॉक, बहुत शॉक लगता है, अनएक्सपेक्टेडली she receives a very curt rejection, very abrupt rejection. मुंह पे भोंडे तरीके से मिसेस पियर्सन, जिसके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की सोल है, आत्मा है, वो मना कर देती है, नहीं करी, क्या करोगी, नहीं करी, right? From a smoking Mrs. Pearson, and when she comes in, she sees that her mother is actually smoking, right? With Mrs. Fitzgerald's soul, obviously. Her mother does not stop and the dismissal, right? At the dismissal, and she expressly criticizes her boyfriend Charlie Spence. She calls him buck teeth and half-witted, कि उसके दांत बाहर निकले हुए हैं और वो बेवकूफ है. He is half-witted, right? He is a nutcase, he is a nut job, right? And she starts calling him names, calling him dumb and unflattering. Impressive नहीं है बिल्कुल. And Doris cannot endure this. Doris को बर्दाश्त नहीं होता. And I mean, this response makes her cry. और वो रोने लगती है. क्यों? क्योंकि उसे इस तरीके के रवैये की आदत नहीं थी. माँ उसकी बहुत दब्बू सी थी, वो लोग जो चाहते थे उससे करवा लेते थे. सो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड शी रन्स टुवर्ड्स हर रूम. राइट आफ्टर डोरिस, द सन, आई मीन इट्स हर टर्न नाउ, अब इनकी ताजपोशी होनी है. द सन हुज नेम इज साइरिल, ही एंटर्स द हाउस एंड ही कैजुअली डिमांड्स हिज इवनिंग टी. बेटा आया, उसने भी कोई हाय हेलो नहीं, क्या पूछा आके सबसे पहले, माँ मेरी चाय कहाँ है, चाय रेडी है कि नहीं है. हाउएवर ही ओनली गेट्स अ वेरी कोल्ड डिसमिसल. द डिसमिसल, नहीं है, मेरी हो गई, तुम अपनी देख लो, मैंने तो पी ली, तुम्हें पीनी अपनी बनाओ पी लो. दिस इज वॉट शी रिप्लाइज, राइट? एंड मिसेस पियर्सन इज रेजिंग, हर एटीट्यूड इज वेरी एज इफ शी इज अबाउट टू बर्स्ट, राइट? ही इज टेकन अबैक, द सन साइरिल, ही इज टेकन अबैक. जैसे डोरिस को शॉक लगा, अब शॉक लगने की बारी किसकी थी, साइरिल की. एंड ही कंसिडर्स दैट हर मदर मे बी undergoing a breakdown. उसे लगता है माँ के साथ कुछ गलत हो रहा है. Maybe she is undergoing a psychological breakdown, nervous breakdown, कुछ हो रहा है. She is not behaving normally. Now Mrs. Pearson remonstrates with her children about the fact that all of them have a social life, right? And only work for 40 hours a week and enjoy a weekend break. So she gets on a discussion with the family कि तुम लोगों का तो पूरे वीक का जो है वो 40 घंटे का काम होता है, ठीक, तुम्हारी social life है, right? And you also enjoy your weekend break, right? In contrast, then she, also discusses her position in the family. And contrastingly, being a wife and a mother, she is constantly working for 24 hours, right? 24/7 she is working with no break, with no weekend break, right? No Sunday for her, no holiday for her, 7 days a week, and that too without any appreciation, let alone a salary or a wage. तो कहती है कि तुम लोग तो 40 घंटे पूरे वीक में करते हो, मैं पूरे दिन 24 घंटे 24/7 I am on my toes. I am working for you, right? Like a servant, like a maid servant of this family, of the house. And what do I get in return? Not even tinge of an appreciation. इतना सा शुक्रिया भी नहीं मिलता मुझे, प्यार भी नहीं मिलता, right? I mean, leave aside the salary part. सैलरी तो दूर की बात है, तनख्वाह तो दूर की बात है, वेजेस, मुझे थैंक्स तक नहीं मिलता. So the daughter and the son have been handled. Now it was the turn of the husband. So the husband, whose name is George Pearson, he enters and Mrs. Pearson is now drinking, and takes her feet off.
शी इज ड्रिंकिंग स्टाउट, एक शराब होती है, वो पी रही है दिन में, जबकि यूजुअली आई मीन व्हेन दीज फॉरेनर्स यूरोपियंस ड्रिंक, दे ड्रिंक इन द इवनिंग, राइट? I mean, maybe before dinner, after dinner, that I have no idea about. But yes, she is doing it in broad daylight. दिन दहाड़े वो शराब लेके बैठी है और पी रही है. And her feet is on the couch, सोफे पे पैर रख के, right? Suddenly, her husband George Pearson, he enters the scene, right? He informs them that he has a dinner function at the snooker club and therefore would miss her supper ante, his supper ante, right? तो वो आता है, बताता है, जॉर्ज बताता है कि मेरा आज एक प्रोग्राम है and I have to go to the snooker club. Why? Because I have to, you know, I have, to have dine with my friends. I'm going to dine with my friends. I'm going to dine out today. The visage of drinking, right? Mrs. Pearson startles him and loses his cool. तो जॉर्ज जब देखता है कि उसकी बीवी शराब का ग्लास ली शराब पी रही है, तो उसको गुस्सा आ जाता है एकदम से, राइट? ही इज एंग्री, ही लूजेस हिज कूल, ही लूजेस हिज टेम्पर, एंड मिसेस पियर्सन रॉयली रिस्पॉन्ड्स टू हिज डिस्गस्ट बाय क्लेमिंग दैट इफ ही कैन ड्रिंक सो कैन शी, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, दिस इज राइट, इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? तो मिसेस पियर्सन कहती, क्यों भाई, तुम पी सकते हो, तुम क्लब जा सकते हो, मैं नहीं पी सकती, तुम अपनी मर्जी से शाम में पीते हो, मैं अपनी मर्जी से दिन में पी रही हूँ, राइट? व्हाट्स द, आई मीन देयर इज नो हार्म इन इट, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता है, राइट? शी ऑल्सो डिक्राइज हिज क्लब कंपेनियंस हु कंसिडर हिम अ लाफिंग स्टॉक, एंड देन वेरी स्कैथिंगली, बहुत ही कड़वे शब्दों में वो क्या बताती हैं अपने हस्बैंड को, तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो, जहां रोज अपनी हाजिरी लगाते हो, अपनी बीवी को छोड़ के चले जाते हो, ना कि अपनी बीवी को बाहर लेके जाओ, कभी उसकी हेल्प करो काम में, यू गो आउट टू दैट क्लब एंड दे call you a joker behind your back. They call you Pompey Ompy Pearson behind your back. तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं यही लोग, तुम जिनके लिए मरते हो जाते हो रोज, जिनके साथ खेलते हो बैठते हो, राइट? You are a laughing stock for them and a butt for all the jokes. So you are for them a food for their jokes, right? George is dumbfounded. He is out of his wits, disappointed and hurt. बहुत hurt होता है उसे, obviously. ऐसी चीजें हम अक्सर बताते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये मिसेस पियर्सन नहीं थी, बॉडी मिसेस पियर्सन की थी, अंदर तो मिसेस फिट्जराल्ड बैठी थी, आत्मा किसकी थी, सोल किसका था, मिसेस फिट्जराल्ड का। तो वो बिल्कुल साफ साफ बता देती है दैट यू आर अ जोकर फॉर देम, राइट? एंड दैट इज व्हाई जॉर्ज एक्सट्रीमली हर्ट, बहुत डिसअपॉइंट होता है, बहुत हर्ट होता है, राइट? एंड व्हाट हैपेंस, ये इस सब का क्या नतीजा होता है? ग्रेजुअली ऑल द थ्री मेंबर्स, डोरिस, साइरिल एंड मिस्टर पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, all of them, they realize that, you know, ignorance and irrelevance, right? Irreverence to the toils and devotion of Miss Pearson, the mother and the wife. तो उनको अपनी गलती का अंदाजा होता है कि हम कैसे अपनी माँ को निगलेक्ट कर रहे थे, जॉर्ज को अंदाजा होता है कैसे मैं अपनी वाइफ को निगलेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, राइट? एंड हाउ शी हैज बीन टॉयलिंग डे एंड नाइट टू मेक लाइफ इजी फॉर अस, right? How she is completing all her duties on time, whatever tasks had been assigned to her, right? Now the real Mrs. Pearson, who is in Mrs. Fitzgerald's body, she joins them and pleads with Mrs. Fitzgerald. वो हाथ जोड़ के, देखो बहुत हो गया, मेरी फैमिली को और मत सताओ, अब मैं हैंडल कर लूंगी, प्लीज प्लीज एक्सचेंज द सोल्स। अब वो कहती है कि चलो हम सोल्स एक्सचेंज कर लेते हैं, एंड शी रिक्वेस्टेड टू स्विच बैक टू देयर ओरिजिनल बॉडीज, राइट? फिट्जराल्ड रिलक्टेंटली एग्री होती है, वो अभी जाना नहीं चाह रही है, एक्चुअली शी इज, यू नो, एंजॉइंग ऑल ऑफ दिस, उसे मजा आ रहा है इस फैमिली का भूत बनाने में, उनको परेशान करने में। एंड मिसेस फिट्जराल्ड गिव्स वन राउजिंग फाइनल लेसन टू द फैमिली एंड रिस्टोर्स थिंग्स टू नॉर्मल। Before leaving, Mrs. Fitzgerald, with the wave of her hand, she gives a warning to Mrs. Pearson that अगर तुमने थोड़ी सी ढील दी इस वक्त तो ये फिर से वैसे हो जाएंगे, प्लीज नो, you have to stay a little strict with them so that they know what you are, what position you hold in this family. Your position is equal to what position they have or they entertain or they enjoy in the family. तो आपको बहुत ढील नहीं देनी है। The entire exercise succeeds, you know, in its ambition. तो ये जो एक्सरसाइज थी, ये प्लान था, इसका एम्बिशन क्या था कि इन तीनों को रियलाइजेशन हो जाए कि हम जो कर रहे हैं माँ के साथ वो गलत कर रहे हैं, राइट? एज द पियर्सन्स, द एंटायर पियर्सन फैमिली, दे रियलाइज देयर मिस्टेक, राइट? देयर फॉली, FOLLY, फॉली, गलती को कहते हैं, एंड डिसरिगार्ड फॉर द फैमिली। तो अपनी फैमिली के लिए जो डिसरिगार्ड था, फैमिली का मतलब क्या होता है? सब साथ बैठे, आई मीन ऑल सिट टुगेदर, दे ईट, दे एंजॉय, बट हियर one is going with one friend, the other one is going with another group, and the third one is going to the club. तो सब अलग 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 अलग, यहाँ कोई फैमिली वाली फीलिंग थी नहीं, और माँ उसमें सबसे ज्यादा इग्नोर होती थी। She was
treated as dirt in the family. They decide to dine together and also play games together. So even though this was a very, bad experience for the rest of the family members, for Doris, for Cyril, for George Pearson, but yes, I mean, the end was quite fruitful, okay? So this was, the summary of the chapter very crisply. If you have any queries, any questions, you can always use the comment section. Till then, you have a good day. Hasta la vista.